ધોરણ 4 પાઠ 4 अपने बारे में। તો બાળકો આ પાઠની અંદર પોતાના વિશેની માહિતી ભરવાની છે. પોતાના વિશેની માહિતી એટલે કે પોતાનું નામ, પપ્પાનું નામ, તમારું ગામનું નામ, તમે કયા ધોરણમાં ભણો છો, આ બધી જ માહિતી આવે છે બાળકો. એ માહિતી આ પાઠની અંદર આપણે શીખવાની છે અને પછી એને ભરવાની પણ છે. तो अपने बारे में इस तरह से हमको यहाँ पे पढ़ने का है. जैसे अपने बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है और लिखना भी है. तो आइए बच्चों, हम ये पाठ आज पढ़ने की शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, ये बॉक्स दिया गया है छोटा सा, उसके अंदर क्या लिखा है, अपना फ़ोटोग्राफ चिपकाइए. तो बच्चों अपना जो पासपोर्ट साइज का जो छोटा सा फ़ोटो है ना, यहाँ पे आपको चिपकाना है. समझ में आया? तो તમારો નાનો ફોટો હોય ને તો આ બોક્સની અંદર તમારે એને ચિપકાઈ દેવાનો છે. બરાબર છે બાળકો? સમજી ગયા? ચાલો હવે આપણે પહેલા પ્રશ્નની અંદર જઈશું. આપણને ખાલી જગ્યા જેવું આપ્યું છે, એની અંદર આપણે માહિતી ભરવાની છે. તો આપણે બોલતા જઈશું અને પછી એની માહિતી પણ આપણે સમજાવતી જઈશ. જેમ કે પહેલી ખાલી જગ્યા બતાવવામાં આવી છે, मेरा नाम खाली जगह है. मतलब यहाँ पे अपने को खाली जगह भरने की है. तो मेरा नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे कि मैं मेरा खुद का नाम बताती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मेरा नाम, तो यहाँ पे लिखूँगी भावना. तो पूरी तरह से ऐसा पढ़ा जाएगा, मेरा नाम भावना है. अभी दूसरी खाली जगह में जाते हैं, मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. तो आप अभी चौथी कक्षा में पढ़ते हो, तो आप कक्षा 4 लिख सकते हो, है ना. तो यहाँ पे आप कक्षा 4 लिखने की है. आइए आगे की खाली जगह की ओर जाते हैं. यहाँ पे लिखा है, मैं खाली जगह नामक गांव में रहता हूँ या रहती हूँ. तो आपका जो भी गांव है, पापा का गांव रहता है ना, तो वो गांव का नाम आप यहाँ पे लिखने का है. अभी चौथी खाली जगह में जाते हैं, मेरे पिता का नाम खाली जगह है. तो आप अपने पिता का नाम એટલે કે પપ્પાનું નામ તમારે અહીંયા આગળ લખવાનું છે. पांचवी खाली जगह की ओर जाते हैं. यहाँ पे लिखा है, मेरी माँ का नाम खाली जगह है. तो તમારે અહીંયા આગળ મમ્મીનું નામ લખવાનું છે. छठी खाली जगह तरफ जईशुं આપણે, मेरे भाई का नाम खाली जगह है. તમારા ભાઈનું નામ જે બી હોય બાળકો, તો તમારે અહીંયા આગળ તમારા ભાઈનું નામ લખવાનું છે. હવે બીજી ખાલી જગ્યા, सातवीं खाली जगह तरफ जईशुं. અહીં છે, मेरी बहन का नाम खाली जगह है. તો તમારે અહીંયા આગળ બહેનનું નામ લખવાનું છે. आठवीं खाली जगह तरफ जईशुं. અહીંયા છે, मेरे चाचा का नाम खाली जगह है. ચાચા એટલે કાકા. હિન્દીમાં ચાચા કહેવાશે અને ગુજરાતીમાં ચાચા એટલે કાકા. તો તમારે તમારા કાકાનું નામ જે બી હોય એ તમારે અહીંયા આગળ ખાલી જગ્યામાં કાકાનું નામ લખવાનું છે. નવમી ખાલી જગ્યા તરફ જઈશું. અહીંયા છે, मेरी बुआ का नाम खाली जगह है. बुआ એટલે ફોઈ. તમારા પપ્પાની બેન હોય ને એને બુઆ કહેવાય, એટલે એને ફોઈ કહેવાય. તો એ ફોઈનું નામ પણ તમારે લખવાનું છે. ચલો 10મી ખાલી જગ્યા तरफ જઈશું. आपके परिवार में कौन कौन है, उसको राइट या रॉन्ग चिन्ह लगाइए. તો જો બાળકો અહીંયા આગળ આપણને નામ લખ્યા છે, એની બાજુની અંદર આપણને નાના નાના બોક્સ પણ આપેલા છે. તો એની અંદર આપણે જો હોય તો સાચું કરવાનું, ના હોય તો એને રોંગની નિશાની એટલે કે ચેકડીની નિશાની તમારે લગાવવાની છે. તો અહીંયા આગળ છે પહેલું માતા. તો માતા એટલે કે સમજાવ્યું હતું ને મમ્મી, હા. તો તમારે માતા હોય તો રાઈટ કરવાનું, ના હોય તો રોંગ કરવાનું. પિતા હોય તો રોંગ કરવાનું, પિતા હોય તો રાઈટ કરવાનું, ના હોય તો રોંગ કરવાનું. ભાઈ છે તો ભાઈ હોય તો શું કરવાનું, રાઈટ કરવાનું, ના હોય તો રોંગ કરવાનું. बहन है तो राइट, नहीं है तो रॉन्ग. इस तरह से दादी का, दादा का,
ચાચા કા, ચાચી, નાના, નાની. નાના એટલે કે મમ્મીના પપ્પા અને નાની એટલે મમ્મીની મમ્મી. બરાબર સમજી ગયા? તો એ હોય તો તમારે રાઈટ કરવાનું, ના હોય તો રોંગ કરવાનું. ફૂફા. ફૂફા એટલે પપ્પાના બેન હોય ને, એમના હસબન્ડ હોય ને એને ફૂફા એટલે કે ફોઈના પતિને શું કહેવાય? ફુવા. ગુજરાતીમાં ફુવા કહેવાય તો હિન્દીમાં શું કહેવાશે? ફૂફા. તો હોય તો તમારે રાઈટ કરવાનું, ના હોય તો રોંગ કરવાનું. બુઆ હોય તો રાઈટ, ના હોય તો રોંગ. તો આ રીતે તમારે આ જે ખાલી જગ્યા આપી છે એને તમારે ભરવાની છે. તો તમને બાળકો સમજણ આવી ગઈ? ઓકે, ચલો હવે 11મી ખાલી જગ્યા તરફ આપણે જઈશું બાળકો. અહીંયા લખ્યું છે મેરે દોસ્ત યા મેરી સહેલી કા નામ ખાલી જગ્યા હે. તો મેરે દોસ્ત એટલે ભાઈબંધ અને મેરી સહેલી એટલે કે બેનપણી. તો બાળકો તમારે ભાઈબંધ હોય તો એનું નામ લખવાનું છે અને છોકરીઓ તમારી બેનપણી હોય તો તમારી બેનપણીનું નામ લખવાનું છે. 12મી ખાલી જગ્યામાં છે मुझे खाली जगह खेलना पसंद है. आपको जो भी खेल पसंद हो वो या आप लिख सकते हो, जैसे कि लंगड़ी हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो. जो भी आपको खेल पसंद है अपने तरीके से ये खेल का नाम आपको लिखने का है. और आगे जाते 13वीं खाली जगह मेरे अध्यापक, मेरी अध्यापिका का नाम खाली जगह है. अध्यापक એટલે શિક્ષક અને અધ્યાપિકા એટલે શિક્ષિકા. તમને જે શિક્ષક તમને ભણાવતા હોય તો તમારે એનું નામ લખવાનું છે. સર હોય તો સર, ટીચર હોય તો ટીચર. તમારે આ ટીચરનું નામ લખવાનું છે બાળકો. હવે તમે 14મી ખાલી જગ્યા તરફ જઈશું બાળકો. અહીંયા લખ્યું છે મેં સુબહ ખાલી જગ્યા બજે ઉઠતા હું યા ઉઠતી હું. તો છોકરો હોય તો જેટલા વાગે બી ઉઠતા હોય એટલા વાગે તમારે અહીંયા આગળ લખવાનું છે. છોકરીઓએ પણ એ જ ટાઈમ અહીંયા આગળ લખવાનો છે. અને પછી છોકરીઓ હોય તો આ તમારે ચેકી કાઢવાનું અને છોકરા હોય તો ઉઠતી હું ચેકી કાઢવાનું. બરાબર છે બાળકો? સમજણ પડે છે ને? ઓકે, સરસ. હવે આપણે જઈશું 15મી ખાલી જગ્યા તરફ. અહીં લખ્યું છે मैं खाली जगह बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ. आप जो भी बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, पुलिस बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो. और लड़का हो या लड़की हो तो 1-2 चेक देने का. लड़की हो तो चाहता चेक देने का. लड़का हो तो यहाँ पे चाहती है वो चेक ना है. आपको समझ में आया? ठीक है. अभी 16वीं खाली जगह की तरफ जाते हैं. यहाँ पे लिखा है मुझे खाली जगह ज़्यादा पसंद है. आपको जो भी पसंद है आप लिख सकते हो. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है खेल, तो खेल में आपको क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है. यहाँ पे खिलाड़ी है तो खिलाड़ी में कौन सा खिलाड़ी पसंद है? आपको जो भी खेल का खिलाड़ी पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. और यहाँ पे लिखा है पढ़ना. आपको क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आपको पसंदीदा जो भी पढ़ना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. खाना, आपको जो भी खाना पसंद हो, फेवरेट हो आपका, वो आपको खाना यहाँ पे नाम लिखना है. गाना, जो भी आपको गाना पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. देखना, आपको जो भी देखना पसंद हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. मिलना, जिससे भी आपको मिलना पसंद हो वो आप लिख सकते हो. रंग, जो भी आपको रंग पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो आपको नीचे आपका बॉक्स दिया गया है और ऊपर नाम लिखा गया है. उसके मुताबिक आपको यहाँ पे जवाब लिखने का है. समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो हम आगे की ओर जाते हैं. और आगे यहाँ पे हम जाते हैं. यहाँ पे लिखा है 17 में मुझे नापसंद है. आपको जो नापसंद हो वो आप लिख सकते हो. यहाँ पे बताया है ना, जैसे कि झूठ बोलना,
तो झूठ बोलना पसंद नहीं है, खराब बातें गंदी बातें करना पसंद नहीं है। आपको जो भी पसंद ना हो आप यहाँ पे 3 खाली जगह में अलग अलग आप लिख सकते हो। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से ये खाली जगह का आपको भरने की है। आइए, यहाँ पे बताया गया है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में क्या है वो आप देखो। यहाँ पे लिखा है कक्षा એટલે કે ધોરણ। હિન્દીમાં કક્ષા કહેવાય, ગુજરાતીમાં એને ધોરણ। પરિવાર, પરિવાર એટલે કુટુંબ, હે ને? આપણે બધા સાથે રહીએ છીએ ને, મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન દાદા દાદી, એને પરિવાર કહેવાય, એને કુટુંબ કહેવાય। ચાચા, ચાચા એટલે પિતા કે છોટે ભાઈ, તો પપ્પાના નાના ભાઈને આપણે ચાચા, ચાચા એટલે કાકા કહીશું, બરાબર? બુઆ, બુઆ એટલે કે પિતા કી બહન, બુઆ એટલે ફોઈ, પિતા એટલે પપ્પાની બેન, પપ્પાની બેનને ફોઈ કહીએ છીએ એ। અધ્યાપક, અધ્યાપક એટલે શિક્ષક, જે તમને ભણાવે એ। સમજી ગયા? ઓકે, ચલો આપણે અભ્યાસ 1ની અંદર, પ્રશ્ન 1ની અંદર આપણે જઈશું। અભ્યાસની અંદર અહીંયા બતાવ્યું છે સુનિએ ઓર બોલીએ। તો આપણે સાંભળવાનું છે અને પછી એને બોલવાનું છે। તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈશું ગાંવ એટલે ગામ, કક્ષા એટલે ધોરણ, અધ્યાપક એટલે શિક્ષક અને બુઆ એટલે ફોઈ। બ 1 मैं विद्यार्थी हूँ। बीजू मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं त्रीजू मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। चौथों हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। तो बच्चों आप यहाँ पे आपकी पाठशाला का नाम विद्यासागर लिख सकते हो, या ऐसा बोलकर भी आप पढ़ सकते हो। सही बात है बच्चों? ठीक है। और आगे प्रश्न 2 की ओर जाते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका नाम क्या है। तो आपका नाम बच्चा जो भी हो आपका नाम वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आया? ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके पिताजी का नाम क्या है। तो बाळको तमारा पप्पाનું નામ જે બી હોય એ તમારે જવાબની અંદર લખવાનું છે। હવે પ્રશ્ન 3 તરફ જઈશું। અહીંયા પહેલો કે आपकी माताजी का नाम क्या है। તો તમારી મમ્મીનું નામ જે બી હોય એ નામ તમારે લખવાનું છે। સમજણ પડે છે ને બાળકો? તો આ રીતે આપણે જોવાનું લખવાનું છે। प्रश्न 3 तरफ जईशु। यहाँ पे लिखा है पढ़िए और लिखिए। तो पढ़िए એટલે કે તમારે વાંચવાનું છે અને લીખીએ એટલે કે તમારે લખવાનું છે। તો અહીંયા આગળ લખ્યું છે પરિવાર, તો તમારે એને નીચે એ જ પરિવાર નીચેની લીટી તમને આપી છે ને એની નીચે સેમ, તો અહીંયા આગળ લખવાનું છે। जैसे यहाँ लिखा है परिवार, तो आपको नीचे लिखना है परिवार। सहेली, तो आपको भी यहाँ पे लिखना है सहेली। दोस्त, तो ये आपको नीचे लिखना है दोस्त। अध्यापक, तो आपको भी लिखना है अध्यापक। गांव, तो आपको लिखना है गांव। कक्षा, तो आपको भी लिखना है कक्षा। अच्छा, आपको भी लिखना है अच्छा। खिलाड़ी, तो आपको भी लिखना है खिलाड़ी। तो इस तरह से आपको पढ़ने का है और बोलने का है। चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं। परिवार, सहेली, दोस्त, अध्यापक, गांव, कक्षा, अच्छा, खिलाड़ी। तो बच्चों जब भी आप पढ़ने बैठते हो, जब भी आप ये लिखने बैठते हो, तो अपने आप आराम से ये शब्द आप पढ़ना है आपको, ठीक है? और अच्छी तरह से आपको लिखना भी है, ताकि आपको हिंदी में ये लिखना भी आ जाए। तो आपको पता है ना, परिवार मतलब कुटुंब, सहेली मतलब बेनपणी, दोस्त एटले भाई बहन, अध्यापक एटले शिक्षक, गांव एटले गाम, कक्षा एटले धोरण,
અચ્છા એટલે સારું, ખિલાડી એટલે જે ખેલતો હોય ને કોઈ બી રમતવીર, એનું નામ તમારે અહીંયા આગળ લખવાનું છે. હવે આગળ જોઈશું બાળકો. સ્વાધ્યાય અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે પ્રશ્ન 1ની અંદર સહી જોડે બનાવીએ, એટલે કે સાચી જોડી તમારે બનાવવાની છે. તો પહેલાં અહીંયા આગળ આપણને અ આપ્યું છે અને ब आप्યું છે. तो यहाँ पे अ है और ब, तो अ में से देखकर ब में से जवाब हमको ढूंढना है और फिर उसको जोड़ना है. ठीक है, अच्छी जोड़ी बनाने की है, सही जोड़ी आपको बनाने की है. जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा, और सामने लिखा है भाभी, दादी, मामी, माता और चाची. तो यहाँ से हमको ढूंढना है और फिर सही जोड़ बनाने की है. जैसे कि पिता है तो सामने से क्या लेंगे हम, माता, तो पिता माता. भाई तो क्या लेंगे, भाभी, तो भाई और भाभी. चाचा चाची, तो चाचा और चाची. मामा मामी, तो मामा मामी. दादा दादी, दादा और दादी. तो इस तरह से सही जोड़ बनाने की है. चलो प्रश्न 2 की ओर जाते हैं. और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. तो यहाँ पे हमको जवाब दिया गया है, तो उसमें से जो सही बैठता है उससे हमें खाली जगह भरनी है या पूर्ण करनी है. जैसे कि यहाँ पे पहली खाली जगह है, अरुणा 4ठी कक्षा में खाली जगह है, तो पढ़ता है कि पढ़ती है. तो अरुणा कौन है, लड़की है. तो आप क्या लिखेंगे, अरुणा 4ठी कक्षा में पढ़ती है. बराबर. और दूसरी खाली जगह में लड़का खेल रहे हैं कि रहा है, तो रहे हैं नहीं सेट होगा, तो क्या आएगा, पूर्ण करना है, तो लड़का खेल रहा है. तीसरी, मैं माता पिता का आदर खाली जगह करता हूँ कि करते हैं, तो आदर करता हूँ आएगा. तो ये करता हूँ यहाँ पे लिखने का है. तो मैं माता पिता का आदर करता हूँ. वापस फिर से देखते हैं. अरुणा 4ठी कक्षा में पढ़ती है. दूसरा, लड़का खेल रहा है. तीसरा, मैं माता पिता का आदर करता हूँ. तो इस तरह से खाली जगह आपको भरने है. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया. आइए हम प्रश्न 3 की ओर जाते हैं. और यहाँ पे बताया गया है, पढ़ते हैं. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए. तो यहाँ पे कोष्टक दिया ही गया है और यहाँ पे लिखा है मैं, मुझे, मेरी और मेरे. तो जो सही होता है वही हमको यहाँ पे आंसर लिखने का है. तो यहाँ पे पहला है खाली जगह लड़की हूँ, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा मैं लड़की हूँ. दूसरी खाली जगह में जाते हैं. यहाँ पे लिखा है खाली जगह पिता किसान है, तो ये लिखेंगे मेरे पिता किसान है. तीसरी खाली जगह में खाली जगह माता घर काम करती है, तो मेरी माता घर काम करती है. और लास्ट में आएगा खाली जगह खेलना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है लास्ट में. और लिखना है मुझे खेलना अच्छा लगता है. पहली में मैं आएगा, दूसरी में मेरे आएगा, तीसरी में मेरी आएगा और चौथी में मुझे आएगा. तो इस तरह से हमको खाली जगह भरने की है. तो यहाँ पे वापस देख लेते हैं. मैं लड़की हूँ, मेरे पिता किसान है. किसान એટલે ખેડૂત, બરાબર. फिर
फिर आएगा मेरी माता घर काम करती है। घर काम એટલે ઘરનું કામ કરે ને એ। और लास्ट में आएगा मुझे खेलना अच्छा लगता है। खेलना એટલે રમવું है ને રમત। તો મને રમવાનું સારું લાગે છે એવું થશે, બરાબર છે। તો આ રીતે બાળકો તમારે ખાલી જગ્યા ભરવાની છે। હવે છેલ્લે જઈશું આપણે प्रश्न 4। अपनी सखी अपने दोस्त का परिचय लिखे। जैसे अपना परिचय बच्चों लिखा ना, जैसे कि अपने बारे में मेरा नाम खाली जगह है, मैं ये गांव में रहता हूँ, मेरे पापा है, मेरे मम्मी का नाम भाई बहन दादा दादी फूई फुआ जो भी है अपने बारे में सब कुछ आपने बताया। उसी तरह आपके दोस्त हो એટલે કે તમારા ભાઈબંધ હોય અથવા તો તમારી બેનપણી એટલે કે સહેલી હોય है ना, सहेली बेनपणी तमें जी कहता हो, तो उसके बारे में आपको परिचय लिखने का है। थोड़ी बात आप उसके बारे में लिख सकते हो, उससे पूछ के आप लिखना है। तो प्रश्न 4 है। और यहाँ पे बताया है योग्यता विस्तार એટલે કે हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदार એટલે આપણા સગાવાલા है ना, આપણા કુટુંબ કબીલાના रिश्तेदार है ना સગાવાલા એ। તો આપણે અહીંયા આગળ જોવાનું છે કોને શું કહેવાય એ આપણને અહીંયા આગળ બોલવાનું છે અને સમજવાનું પણ છે। જેમ કે यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा है पिता के पिता दादा એટલે કે તમારા પપ્પા હોય અને એમના પપ્પા હોય એમને શું કહેવાય દાદા। બીજામાં પિતા કી માતા દાદી એટલે કે તમારા પપ્પા છે એમની મમ્મી હોય એને તમારે શું કહેવાય દાદી, બરાબર। પછી પિતા કે છોટે ભાઈ ચાચા એટલે કે તમારા પપ્પાના નાના ભાઈ હોય તો એમને શું કહેવાય ચાચા એટલે કાકા કહેવાય। પિતા કી બહન બુઆ એટલે કે તમારા પપ્પા છે એમની બહેનને શું કહેવાય ફોઈ કહેવાય। હવે જઈશું આ બાજુ માતા। તો માતા કે પિતા નાના એટલે કે તમારા મમ્મી છે એમના પપ્પા છે એમને નાના કહેવાય, શું કહેવાય નાના। માતા કી માતા એટલે કે નાની એટલે કે તમારા મમ્મીના મમ્મીને નાની કહેવાય। માતા કા ભાઈ એટલે મામા, તો તમારા મમ્મી છે એમના ભાઈને મામા કહેવાય। અને માતા કી બહન મૌસી એટલે તમારી મમ્મી છે એની બહેનને તમે શું કહેશો માસી, શું કહેશો માસી। તો બાળકો આ રીતે તમારે આ પાઠ પોતાની સાથે મમ્મી અથવા પપ્પાને રાખી અને બાળકો તમારે આ ખાલી જગ્યાની જે બધી માહિતી છે એ તમારે ભરવાની છે। સમજણ પડી ગઈ બાળકો? તો તમારે આ રીતે આખું જે પાઠ છે પોતાના વિશે એટલે કે अपने बारे में, तो अपने बारे में पापा या मम्मी को साथ में बिठा के पूरा पाठ आपको ये भरने का है, तभी आपको ये अच्छी तरह से ये पाठ आप भर सकते हो। तो होमवर्क में बच्चों आपको ये पाठ पूरा भरने का है और अपने बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखना है। समझ में आया? और प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं और खाली जगह दिया गया है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे नोटबुक में लिखने का है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये पाठ? तो हम वापस दूसरा एक पार्ट लेके फिर से मिलेंगे। ओके बाय बच्चों, वापस मिलते हैं।